ओके बेटा। तो आज की क्लास का जो बेसिक हमारा मोटो है, दैट इज एन ओरिएंटेशन। कि मैं आपको बताऊं आपकी ए लेवल फिजिक्स में टॉपिक्स क्या क्या हैं, सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है, एंड किस तरीके से हम लोग ए लेवल फिजिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इनिशियली बेटा, जिस तरह हमारे पास ओ लेवल्स में सब्जेक्ट कोड था 5054 एंड एएस में हमारे पास सब्जेक्ट कोड था, सॉरी आईजीसीएसई में सब्जेक्ट कोड था 0625। इसी तरह फिजिक्स का ए लेवल्स का, वेदर इट्स एएस और ए टू 9702, हमारे पास सिलेबस पास कोड है और सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, तो ये हमें माइंड में रखना है। ठीक है, नाउ इफ यू आर टेकिंग क्लासेस फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारा मेरा और आपका इंटरेक्शन पहली मर्तबा हो रहा है, सो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। that me myself, Moiz Ahmad Dawoodi, it's been like more than 10 years I've been teaching O and A levels physics, and currently जो है मैं मॉर्निंग की these three affiliations I am associated with for O and A levels, and these are the evening affiliations I am a part of. So there has been two, I mean, nationwide awards or nationwide distinctions जो कि I or my students managed to obtain previously. एंड ये दो स्टूडेंट्स थे, अब्दुल वासिफ खान एंड फातिमा शाहिद खान, जिन्होंने पोजीशंस ली थी थ्रू आउट पाकिस्तान, विच यू कॉल डिस्टिंक्शन। सीआईटी में हमारी कुछ फैकल्टी को आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सर शाहजेब डील्स विद मैथमेटिक्स, सर उसामा शाह डील्स विद केमिस्ट्री, डॉक्टर नूर बायोलॉजी, एंड सर खुर्रम रिजवी सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो ये हमारी साइंस की फैकल्टी है। साथ साथ जो भी हम लोग कवर करेंगे दैट इज बीइंग अपलोडेड ऑन यूट्यूब, एंड अभी करेंटली मैं वेबसाइट पे भी काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द अगर वो वेबसाइट वाला काम कंप्लीट होता है तो आपका जो भी होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड वाला प्रोटेक्टेड वर्जन होगा, जो कि आपको तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड पीडीएफ उस वेबसाइट के थ्रू आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। So this is how our YouTube page is for the time being, and इस तरह वीडियोस मैं YouTube के पेज पे अपलोड करता हूँ, एंड विद द YouTube इन माइंड एक और Instagram का पेज है हमारा जो साथ साथ चलता है, एंड दैट पेज बेसिकली डील्स विद experimental phenomena. Like there are some experimental phenomena which a student must have had in mind ताकि चीजें और मजीद बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ओ लेवल एंड ए लेवल दोनों की वीडियोस इस इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर अपलोड होती हैं। तो आप जरूर इसे विजिट करिएगा, एंड आपको एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत मिलेंगे। ठीक है, चलो। दूसरा, विल बी हैविंग अ व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप, एंड व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप इज बेसिकली अ हेल्दी कम्युनिटी, जिसमें मेरे तमाम स्टूडेंट जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे ऐड होते हैं। देयर दे पोस्ट देयर क्वेश्चंस, आई आई मीन क्या कहते हैं, समटाइम आंसर दोज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एंड दिस इज हाउ वी आई मीन प्रोग्रेस अहेड एज अ हेल्दी कम्युनिटी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो आपसे मैं सपोर्ट ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा। सिमिलरली आई कैन सी सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि प्रीवियस स्टूडेंट हैं, तो दे नो हाउ द वर्कबुक्स आर डिजाइंड। सो इसी तरीके से ए लेवल्स में भी वर्कबुक्स हैं एंड ए2 में भी वर्कबुक्स हैं। तो वो वर्कबुक्स इसी तरीके से चल रही होती हैं जिस तरह आपने ओ लेवल्स में वर्कबुक का कॉन्सेप्ट किया था। बस यहाँ पे फर्क सिर्फ ये होगा, एएस में और ए2 में वर्कबुक्स के साथ पास पेपर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्कबुक्स का कंटेंट होगा।
The reason I don't include past papers in A levels because past papers बहुत ज्यादा A levels में प्रैक्टिस करने होते हैं, जिससे प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग और गिविंग यू द पास्ट पेपर्स, मैं रिकमेंड करता हूँ रीड एंड राइट पब्लिकेशन के पास्ट पेपर्स, जो कि बेसिकली कराची पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी इजीली अवेलेबल होते हैं. सो रीड एंड राइट पब्लिकेशन के पास पेपर एक तो इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड दूसरा उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी और उनका अमाउंट ऑफ पास्ट पेपर्स इन द बुक्स आर मोर देन इनफ. तो विच एवर स्टूडेंट, भले उसे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ भले मैं उसे फिजिकल पढ़ाऊँ, ए लेवल्स में आई रिकमेंड रीड एंड राइट पब्लिकेशन. तो आप उनको जरूर गो थ्रू करिएगा पास्ट पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दिस इज हाउ हमारी वर्कबुक्स चलेंगी. ठीक है. एंड apart from workbooks, we'll be having a section wise homework, chapter wise test. That is how we'll be assessing ourselves कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं. ठीक है. और कितना अच्छा हम लोगों ने समझ लिया है. तो होमवर्क्स एंड टेस्ट दोनों साथ चलेंगे हमारे. ये चैप्टर वाइज टेस्ट आ गया. तो ये तो बेटा एक थोड़ा सा स्पीडी वे में मैंने आपको अपने बारे में और अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी थोड़ी सी बता दी. अब जो इम्पोर्टेंट चीज है विच इज आवर पेपर पैटर्न. तो बेटा इस पेपर पैटर्न को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एएस और ए टू के सिलेबस को डिवाइड करना होगा. तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय रेजिंग योर हैंड. आई विल अनम्यूट यू और यू कैन सेंड मैसेज टू को-होस्ट so I can see your question. तो बेटा पेपर पैटर्न हमारा बेसिकली पूरा ए लेवल्स का यानी इंक्लूडिंग एएस एंड ए2 कंप्राइज्ड ऑफ 5 पेपर्स. और ये 5 पेपर्स हमारे पास पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 के डोमेन में डिवाइड हुए होते हैं. तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 बिलोंग्स टू एएस. ठीक है. जबकि पेपर 4 और पेपर 5 बिलोंग्स टू ए2. तो if you look at paper 1, so paper 1 is MCQs based paper. 40 marks का ये पेपर होता है, 40 MCQs होते हैं, and the time to attempt this paper is 1 hour 15 minutes. Similarly, paper 2 which is the descriptive paper, 1 hour 15 minute का ये भी पेपर होता है, 60 marks का पेपर होता है, 7 to 8 compulsory question होते हैं. And finally, paper 3 which is practical paper. तो प्रैक्टिकल पेपर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास. इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, इफ यू बिलोंग टू जोन 4, तो इधर यू कैन अटेम्प्ट पेपर 3-3 और पेपर 3-4. बट इफ यू आर फ्रॉम मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट में पेपर 3-1, पेपर 3-2 ये आपको चॉइस होगी. तो ये बेसिकली आपको चूज करते हैं कि आपने कौन सा वेरिएंट ऑप्ट करना है. ठीक है. सम स्टूडेंट्स गोज विद वेरिएंट 4, पेपर 3 वेरिएंट 4 बिकॉज इसमें गैप थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है उन्हें, उनके दूसरे पेपर से क्लैश नहीं हो रहे होते. तो आप अपने टाइम टेबल की फिजिबिलिटी के मुताबिक चूज करते हैं कि इधर यू गो विद पेपर 3-3 और पेपर 3-4. सिमिलरली previous session, some students opted paper 3-3, some students opted paper 3-4. So that is purely practical based paper, जिसके अंदर 2 घंटे का पेपर होता है, 2 प्रैक्टिकल होते हैं. 1 hour for each practical if you divide. So 2 questions and each question carry 20 marks. So that is how it gives you 40 marks. ये आपका AS है. Paper 1-2, paper 2-2, paper 3-3 और 3-4 as far as zone 4 is concerned. ठीक है बेटा. Similarly, paper 4 variant 2 हमारे पास 2 आवर्स का पेपर होता है. काफी बड़ा पेपर होता है. 12 to 13 कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं. डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होता है. एंड फाइनली पेपर 5 वेरिएंट 2 इज ऑफ 1 hour 15 minute. 2 क्वेश्चन होते हैं एंड 30 मार्क्स का पेपर होता है. इसे प्लानिंग, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन के नाम के पेपर से भी जाना जाता है. तो दैट इज बेसिकली एटीपी प्रो मैक्स, जो आपने ओ लेवल्स में ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल पढ़ा है. उस ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का एक बहुत हाई वर्जन होता है. उसमें भी
ग्राफ के सवाल आते हैं, इसमें भी ग्राफ के सवाल आते हैं। तो ये A2 का पार्ट है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट मुझसे पूछता है इन पांचों पेपर्स में से विच पेपर हैव द हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल, तो आई ऑलवेज, नॉट मी, ईच एंड एवरी टीचर will say that paper 1 is having the highest difficulty. जी अब्दुल मोइस, दोनों के कंटेंट सेम होता है। ठीक है, बस डेट्स डिफरेंट होती हैं एंड पेपर डिफरेंट होता है, मतलब सिलेबस सेम होता है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इसका इसलिए ये है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इज हैविंग डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे सवाल जो होते हैं वो कुछ हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन होते हैं, कुछ मीडियम डिफिकल्टी लेवल होते हैं, कुछ लो डिफिकल्टी लेवल होते हैं। तो हाई डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस में जो है ना टाइम ज्यादा लग जाता है। जब हम पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा व्हाट आई मेंट अबाउट, कि इसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। तो हम इसका हल एक ही है, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी होगी, उतना आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह टाइम मैनेज करना है। ठीक है बेटा। सिमिलरली ये जो ब्लू में लिखी हुई है ये एएस के पेपर की वेरिएंट वेटेजेस है। मतलब 31% ये वाला पेपर इंक्लूड होता है, 46% ये वाला पेपर इंक्लूड होता है एंड 23% ये वाला इंक्लूड होता है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू गेट अ टोटल ऑफ 100, एंड दैट इज हाउ आपका 100 से ग्रेड बनता है एएस का। बट एएस में जो ग्रेड्स होते हैं वो A B C D E यू, बस ये ग्रेड होता है। एएस में ए स्टार नहीं होता। ठीक है, और सारे ग्रेड्स स्मॉल लेटर्स से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। बट जब आप ओवरऑल ए लेवल्स की बात करते हैं तो ए लेवल्स की परसेंटेजेस जो ग्रीन वाली हैं ये मार्क होती है, मतलब पांचों पेपर्स का कंबाइंड रिजल्ट इन वेटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, एंड दैट इज हाउ 100% मार्क्स बनते हैं। तो बेटा इन 100% मार्क्स में जो ग्रेड होते हैं वो ए स्टार, ए, बी, सी, डी, ई एंड ये ग्रेड देता है। ठीक है, तो एएस के ग्रेड्स स्मॉल लेटर से लेके जाते हैं। A2 में जब आप आते हैं तो आपका कंबाइंड रिजल्ट जो बनता है तो वो कंप्लीट कंबाइंड रिजल्ट आपके पास कैपिटल लेटर से शो होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पेपर पैटर्न हो गया। पेपर पैटर्न में अगर आपको कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो you can raise your hand or you can write in the chat box. Or even if you don't have any question, give me a thumbs up or an indication so that I can proceed further. ठीक है अब्दुल। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो बेसिकली सिलेबस है। तो अब सिलेबस को डिस्कस करते हैं। एएस का सिलेबस एज कंपेयर टू ओ लेवल और आईजीसीएसई छोटा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो इफ यू टॉक अबाउट एएस, हमारे पास ओवरऑल 11 चैप्टर्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स, फोर्स, डेंसिटी एंड प्रेशर, वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड डिफॉर्मेशन, ये जनरल फिजिक्स के सेक्शन में इंक्लूड होता है। तो ये जो पूरा पार्ट हमारे पास है दैट बिलोंग्स टू जनरल फिजिक्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वेव्स और सुपरपोजिशन वेव्स के सेक्शन से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट्स, एज नेम डिस्क्राइब्स, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन से बिलोंग करता है। एंड फाइनली पार्टिकल फिजिक्स न्यूक्लियर के सेक्शन से बिलोंग करता है। तो हम क्या टाइमलाइन फॉलो करेंगे सिलेबस की कंप्लीट करने की? ये पहला चैप्टर होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सबसे पहले हम जनरल फिजिक्स करेंगे, एंड जनरल फिजिक्स इज द हाईएस्ट टाइम टेकिंग सेक्शन, जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है,
तो नॉर्मली तकरीबन 4.5 5 महीने लगते हैं इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट होने में. बट वंस जनरल फिजिक्स हैज बीन कंप्लीटेड, सिलेबस बिकम्स वेरी हैंडी और इन कंट्रोल आ जाता है. ठीक है. इसके फौरन बाद मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स करवाऊंगा. पार्टिकल फिजिक्स बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड मे बी विद इन अ वीक और टू ये चैप्टर विद पास पेपर्स कंप्लीट हो जाता है. एंड उसके बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. अच्छी बात ये है, अगर आपने ओ लेवल और आईजीसीएसई की इलेक्ट्रिसिटी तरीके से पढ़ी है तो दैट सेक्शन विल बी वेरी इजी. एंड इन द एंड वी विल डू waves and superposition. This is basically the timeline I'll be following in order to complete A level syllabus or AS syllabus. ठीक है. While इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं they belong to A2. तो मोशन इन अ सर्कल, ग्रेविटेशनल फील्ड, टेम्परेचर, आइडियल गैस, थर्मोडायनेमिक्स, ये तमाम A2 में बिलोंग करते हैं. और A2 का सिलेबस एज कम्पेयर टू AS तो बड़ा है. आई मीन इट्स अ बिट लेंथी सिलेबस. तो ये हमारा AS का सिलेबस होगा एंड तरीकेकार वही होगा. हमारा चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म होने के बाद वी फॉर सॉल्व पास पेपर्स एंड पास पेपर्स के बाद नया चैप्टर शुरू किया. ठीक है. तो इन दिस क्लास we will be targeting paper 1 and paper 2. Okay. And if you live in Karachi, so कराची में या पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी तरीकेकार ये होता है. फरवरी और जनवरी में देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स जो कि प्रैक्टिकल्स के एडमिशंस अनाउंस करते हैं. तो 2 महीने में वो प्रैक्टिकल्स करवाते हैं. दैट इज हाउ आप प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो प्रॉपर तरीके से आपको एपरेटस हैंडल करना होता है. तो बट अगर आप कराची में रहते हैं तो एक तो आपको ये ऑप्शन बता दिया. दूसरा ये कि दी कॉलेजेस इन विच आई टीच वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल्स करवाता हूँ. तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था. द स्टूडेंट्स हु वर ऑनलाइन और फिजिकल, अगर उन्हें प्रैक्टिकल करने होते थे तो वो कॉलेज में मुझे ज्वाइन कर लेते थे. मैं कॉलेज में उन बच्चों की बात कर लेता था. ठीक है. तो दैट दिस इज हाउ we can do paper 3, but these classes are only concerned with paper 1 and paper 2 because paper 3 requires physical handling of apparatus. हाँ, ऐसा जरूर है हम क्लास में पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 5 ये दोनों पेपर्स में क्वेश्चंस के कुछ फैशंस होते हैं और वही फैशन फॉलो होता है. ठीक है. लाइक पेपर 3 में पहला सवाल होता है ग्राफ वाला और दूसरा सवाल होता है एनालिसिस का. ठीक है. प्लानिंग का. इसी तरह पेपर 5 में पहला सवाल होता है पूरी प्लानिंग का, पूरे एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग का. दूसरा सवाल होता है ग्राफ का. ठीक है. तो ये इनके हम लोग जो है फैशन डिस्कस कर सकते हैं विद इन द क्लास. बट एज फार एज एक्सपेरिमेंटल हैंडलिंग इज कंसर्न तो वो क्लास में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. तो ये हमारा सिलेबस हो गया एंड ये पार्ट था हमारा ओरिएंटेशन सेशन था. ठीक है. तो ओरिएंटेशन सेशन सिर्फ यहीं तक था. ये कंप्लीट हो गया. अब हम थोड़ा सा अपने पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट अगर आपके माइंड में कोई सवाल है यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स टू हैव एन आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. जी बेटा. ऑल ओके. क्लियर है सभी यहां तक. ठीक है. चलो. So let's go towards an introductory part of this chapter or first chapter, that is basically physical quantities and units.
चलो, तो जस्ट लाइक ओ लेवल एंड IGCSE, हमारे वर्ड बुक का जो भी चैप्टर होता था, सबसे पहला पेज तो उस चैप्टर का हमारा टाइटल होता था। तो ए लेवल फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, चैप्टर 1, स्टूडेंट नेम आ गया। द नेक्स्ट पेज हमारा सिलेबस आउटलाइन होता है। अब सिलेबस आउटलाइन में अगर आप देखते हैं तो वी हैव 1, 2, 3, 4 sections of this chapter. तो 4 चैप्टर्स हैं, 4 सेक्शन है, सॉरी। दैट मीन्स मोर और लेस 3 और 4 होमवर्क्स होंगे इस सेक्शन। ठीक है। तो पहला सेक्शन बहुत छोटा सा सेक्शन है एंड इसका सवाल पेपर में मैक्सिमम 1 मार्क के अगेंस्ट आता है। ठीक है, या कभी कभार 2 मार्क्स के अगेंस्ट पूछ लेते हैं। तो पहला सेक्शन है अंडरस्टैंड ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो मेरा आपसे सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिजिकल क्वांटिटी? जी, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटीज दैट कैन बी फिजिकली मेजर्ड। जी अब्दुल मोहम्मद, वो क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर कर सकते, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एंड फॉर श्योर इन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ वी हैव टू प्लेस यूनिट। If you are not placing unit, somehow you are declaring that quantity to be non-physical quantity which can't be measured. तो आपने इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हर हाल में इनके साथ यूनिट प्लेस करना होगा। ठीक है। While the other type of quantities are called non-physical quantities, जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते हैं, सिंस आप उन्हें मेजर नहीं कर सकते तो आप उनके साथ कोई यूनिट प्लेस नहीं कर सकते। लाइक द फीलिंग्स, ठीक है, लाइक हेट, सॉरो, लव, ये तमाम फीलिंग्स हैं, वी कैन नॉट मेजर दोज फीलिंग्स, तो दे लाई अंडर द डोमेन ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बट एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न विल बी ओनली टारगेटेड टूवर्ड्स फिजिकल क्वांटिटीज। तो चैलेंज, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन बताई। क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ हमारे पास यूनिट और यूनिट के साथ साथ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हर हाल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ व्हाट डू आई मीन। बेटा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो माय मैथ इज 70 kg, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 70, ठीक है, और यूनिट है kg। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होगा। ठीक है। Similarly, the fan is having a speed of, let's say, 10 meter per second. So 10 is magnitude, while meter per second is unit. तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ आपके पास यूनिट और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होना लाजमी है। ठीक है। वन थिंग क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी अच्छी चीज है, ए लेवल्स में एग्जामिनर आपको यूनिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एग्जामिनर गिव्स यू यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको थोड़ा सा पिछले साल के सॉल्व पास पेपर दिखाता हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया कि एग्जामिनर आपको यूनिट किस तरह प्रोवाइड करता है। तो ये ईयरली पास पेपर में आपको जो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द सेशन मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, तो ये ईयरली पास पेपर्स आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह आपके ईयरली पास पेपर का पहला पेज होता है जिसमें तमाम डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। दूसरा पेज हमारे पास इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स गिवन होते हैं आपको और कुछ फॉर्मूला गिवन होता है। बट इसमें जो फॉर्मूला गिवन होते हैं वो फॉर्मूला नॉर्मली स्टूडेंट्स को याद होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसका कोई खास जरूरत भी होती है फॉर्मूला लिखने की। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको गिवन होते हैं, बट इसके अंदर सारे फॉर्मूला नहीं, बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे हैं जो एग्जामिनर ने इसमें नहीं लिखता।
ठीक है, तो जब हम बाकी फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो ये भी याद कर लेते हैं। ठीक है, further I'll post the recording on YouTube publicly. Okay, so and kindly, हाँ ठीक है, चले। तो ये मैंने आपको ईयरली पास पेपर दिखा दिया। अब मैं आपको दिखा रहा था किस तरह एग्जामिनर यूनिट प्रोवाइड करता है। तो देखें, अब जैसे यहाँ पर यूनिट है, तो अगर हम ओ लेवल या आईजीसीएसई में होते तो एग्जामिनर हमें यूनिट प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखें यूनिट है। हर एक क्वेश्चन के साथ जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपको यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो here we don't have to worry about sir we forgot to write down the unit or what। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक अच्छी बात हो गई। नाउ सेक्शन 1 में बेसिकली जो टॉपिक कवर हो रहा होता है वो रीजनेबल एस्टिमेट्स होते हैं। एंड ये रीजनेबल एस्टिमेट्स आपको याद करने होते हैं, यू हैव टू रिमेम्बर। तो अगर मैं उनको काउंट करूं, जितने मैंने लिखे हुए हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो 56 टोटल रीजनेबल एस्टिमेट मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिए हैं। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दीज 53 रीजनेबल एस्टिमेट, कुछ और भी हो सकते हैं जो हमारे पास आ जाए जिन्हें हमें डिस्कस करना हो। तो मैं रफ कर लेता हूँ 60 रीजनेबल एस्टिमेट, और मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ इन 60 रीजनेबल एस्टिमेट्स को आपने किस प्लान के अकॉर्डिंगली याद रखना। ठीक है, तो हमारी जो क्लास चलेगी वो रफली 8 मंथ्स की क्लास होती है। 8 मंथ्स, ठीक है, 8 मंथ्स। और हर मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं। तो 8 मंथ्स में कितने वीक हो जाएंगे? आई थिंक 32। ठीक है, तो अगर मैं वीकली इन 60 रीजनेबल एस्टिमेट्स को डिवाइड करता हूं, तो ईच एंड एवरी वीक व्हाट डू यू हैव टू डू? You just have to remember, or you just have to recall 2 reasonable estimates. ठीक है, this is what East India Company और English people told us, और हमने उनसे सीखा डिवाइड एंड रूल। तो इसी डिवाइड एंड रूल के कॉन्सेप्ट से मैंने ज्यादा लंबा नहीं किया, वीकली इस पूरे टारगेट को डिवाइड कर दिया, दैट इफ वी हैव 60 रीजनेबल एस्टिमेट, तो स्टार्ट memorizing these reasonable estimates, 2 in each week. There, that is how at the end of the session आपको सारे reasonable estimate याद हो चुके होंगे। So this is how, this is the plan। ठीक है, and this is completely workable plan, जो हर साल मैं स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि आप इस तरीके से reasonable estimates याद रखें। तो ये होते क्या है बेसिकली, थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ। These are basically the estimated values. For example, how many apples are there in 1 kg? तो रफली एवरेज साइज एप्पल जो है वो 1 किलो में 4 से 6 एप्पल आते हैं। सिमिलरली द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, अर्थ, मून। ठीक है, तो ये तमाम यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। लाइक वन ऑफ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो आजकल के दौर में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एवरेज एज क्या चल रही है? 60 to 65 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह के सवाल होते हैं जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो आई बी शेयरिंग द पीडीएफ ऑफ दिस of orientation session as well as the PDF of this chapter which we are discussing। तो उसमें आपको ये तमाम मिल जाएंगे। एंड जो वर्कबुक्स आपको अगर चाहिए हो
तो आप सर मुस्तकीम से वर्कबुक्स के बारे में पूछ लिएगा, वो आपको एक्सप्लेन कर लेंगे क्या तरीकेकार होगा वर्कबुक का। तो वर्कबुक में मैं फिर दोबारा बता दूं, इस दफा पास पेपर नहीं होंगे। फॉर पास पेपर वी हैव टू गो थ्रू, रीड एंड राइट पब्लिकेशंस, टॉपिकल पेपर्स। तो पेपर 1 और पेपर 2 के आप टॉपिकल पेपर्स ले लिएगा एज लेटेस्ट एज पॉसिबल। दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल एंड वेरी मच इनफ टू हैव अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला सेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीट हो। ठीक है, जिस सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस मैंने आपको इस सेक्शन में बताया कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अनरीजनेबल एस्टिमेट्स क्या हैं, और आपने उन रीजनेबल एस्टिमेट्स को तमाम को किस तरह याद रखना है। अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, देन हम लोग दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो सेक्शन है वो है एसआई यूनिट्स। तो बेटा एसआई यूनिट्स में हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज सबसे पहले डिस्कस होंगी। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक और नाम है, वी कैन आल्सो कॉल फंडामेंटल क्वांटिटीज एज बेस क्वांटिटीज। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड टू डिस्कस, स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क, सर ए लेवल्स आसान है मुश्किल है? मैं बोलता हूं ना आसान है ना मुश्किल है, डिसिप्लिन है। मतलब वी हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन प्लान, जिसमें अभी आपने लेक्चर रिसीव किया, और लेक्चर रिसीव करने के बाद आपने अपनी टाइमलाइन के मुताबिक उसे रिवाइज करना है। एंड इफ यू हैव डन इनफ कि आप पास पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने कुछ पास पेपर भी सॉल्व करना है। ये हर लेक्चर के बाद आपकी ए लेवल्स में प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट इज हाउ आई हैव मैनी स्टूडेंट्स हु अचीव्ड, I mean, a better grade as compared to O levels in A levels if they are disciplined. तो A levels में डिसिप्लिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जिन्हें बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, बेस क्वांटिटीज इसलिए कहते हैं, जिस तरह हमने ओ लेवल्स में बात की थी, आईजीसीएसई में बात की थी, पूरी की पूरी फिजिक्स इन क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड होती है। पूरी की पूरी फिजिक्स इन क्वांटिटीज को डील कर रही होती है। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है हमारी। सो विल बी targeting, there are basically a total of 7 fundamental or base quantities. But as far as AS syllabus is concerned, we are only interested in 5 fundamental quantities: length, mass, time, electric current, and temperature. So these are the 5 quantities which we'll be talking about in A level. As far as A2 is concerned, one more additional physical quantity or fundamental quantity will be talked about, which is normally discussed in chemistry, that is moles, the amount of substance. Okay, so if you discuss A2, so A2 mein we'll be talking about these 5 quantities, and alongside with these 5 quantities, additional quantity to the amount of substance, that is mole. Okay, so each and every fundamental or base quantity is assigned by an SI unit. And similarly, the SI unit of length is meter. The SI unit of mass is kilogram. Time, second. Electric current, ampere. Temperature, Kelvin. Similarly, each and every SI unit has a symbol. Like meter is written in short form as small m. Kilogram is written in small short form as kilogram, kg. Second, small s, ampere, capital A, Kelvin, capital K. Okay. So if you observe, there are some units which are written in capital letters
and there are some units which are written in small letters. तो इसका रीजन मैंने यहाँ पे आपको ऐसे ही बता दिया है. The reason is the units which are written in capital letters, they are basically in the memory of the scientist. Like Ampere, Kelvin, Joule, Newton, Coulomb, Pascal, all of them were scientists. So if we put the unit against the name of these scientists, it will always be placed in capital letters. Okay, beta? That means if these are base quantities, I can call these as base units. Okay? All of these are base quantities. That means these are base units. Okay? So the reason I am highlighting here, as far as AS is concerned, we only have these base units, these 5 base units: meter, kilogram, second, ampere, Kelvin. Instead of these 5 units, we don't have to use any unit as base unit. Okay? And there has been a question which normally asked is in the paper, and most of the time a paper is incomplete without these type of questions. So these questions are base units question. The examiner gives you a quantity, and examiner asks you to simplify that quantity in terms of base units. Now, what do I mean by that? Let's discuss. So as I told you, the base units are only 5, meter, kilogram, second, ampere, Kelvin. Now, let me teach you how you will end up having the base unit of any quantity within the syllabus. Okay? So there are some steps which you need to follow in order to simplify the quantity in base units. So step number 1, you need to know the formula. Okay? Whichever quantity you are talking about, you need to know the formula. So if you talk about speed or even velocity, do you know the formula? What is the formula of speed or velocity? G beta. What is the formula for speed or velocity? Meter per second is the unit, Amal. So with the help of meter per second, we can say that if you're talking about speed, it's distance per time, distance covered per unit time. If you're talking about velocity, it's displacement upon time. In both cases, speed or velocity both are written by v. Distance or displacement is written by d, and time is written by t. Similarly, what is the formula for acceleration? V minus u upon t. And what is the formula for force? F equals to ma. So pehla step is write down the formula. So yahan pe I have written down the formula for 3 quantities. Second step, simplify the quantity to base quantities. We have to break down the quantity until we get base quantities. So here, displacement lies in the domain of length. Length is a base quantity. Time, base quantity. So the first formula is already simplified. But if you talk about acceleration, you have to simplify the formula. So we can write it like this. Acceleration can also be defined as the change in velocity per unit time. So velocity is not a base quantity. Okay, velocity is a derived quantity. Base quantity is one, which can be length, mass, time, electric current, and temperature.
So velocity can be broken down into displacement upon time. And this time can be written as it is. Similarly, here mass is a base quantity, let it be. But we have to break down acceleration into velocity upon time. And then we have to break down velocity into displacement upon time. While this t can be written as it is. So the second step was simplify the quantity until you get base quantities. Okay? यहाँ तक clear है? Try to interact as much as possible. Okay? This way, I can see if you have understood the question or if you have understood the concept clearly. And this gives me a sense of that we can move ahead. Okay. Third step, replace the quantities with base units. So the displacement is measured in meter. The time is measured in seconds. So it can be written as meter per second. Here, displacement in meter, time in second, and the other time is also in second. Okay? So we can write it down as meter per second square. And here, mass is measured in kilogram, distance is measured in meter, time is measured in second. Since there are 2 seconds, so it becomes second square. So this is how we followed step number 3. That write down the units of base quantities, which you have already simplified. And beta, inshallah, from the next week. I mean, next week, I'll finalize the days and the days and the timings will be discussed in the WhatsApp group. Okay. So last, no base unit should be in the denominator. Like this, these are in denominator. We don't have to put any unit in denominator. For that, what do we have to do? इसकी power यहाँ पे क्या है 1. When it moves above, the power becomes inverse. So the base unit of speed or velocity is ms minus 1. Okay. Similarly, m second square is in denominator, so it becomes inverse s minus 2. And similarly, kilogram, meter, s minus 2. So these are the base units of first 3 quantities, which already have been talked about. Like speed or velocity have a base unit meter per second or ms minus 1. Acceleration as a base unit ms minus 2 and force as a base unit kilogram ms minus 2. kg ms minus 2. Understood? Now, why I have explained these 3 units or the base units of these 3 quantities first and foremost, because I want you to remember the base units of these 3 quantities. Matlab, you should know the process of how to get the base units of any quantity. Moreover, I am asking you to remember these base units. Like if you're talking about speed or velocity, it should be in your fingertips. The base unit of speed or velocity is ms minus 1. Acceleration, the base unit of acceleration is ms minus 2. Force, the base unit of force is kg ms minus 2. It should be on your fingertips. Okay? Understood? So, having said that, let's move ahead and let me teach you how can you find out the base units
of the other given quantities within the syllabus. Work. Does anyone know the formula for work? Force into perpendicular distance. Uh, G for force into distance and Amal force into distance. Abdul Muiz, force into perpendicular distance is moment. Okay? So don't write force into perpendicular distance, just write force into distance. So work equals to F into D. I have written down the formula. Now, let's simplify that formula. So if we simplify this formula, F can be written as MA and D can be written as it is. As I told you, you can remember the base units of speed, acceleration, or force. So simply write down the units or base units. So here, mass can be written as kg, acceleration is ms minus 2, and displacement is m. It becomes kg, m, basis same power adds up, meter square, s minus 2. So this is how you can find out the base unit of work. Okay. Similarly, if we talk about area, now you should know area depends upon the shape. So first of all, let's talk about a specific shape. For example, circle. So the formula for area of the circle is pi r square. Okay. Here, pi is a number, pi is a constant. So we don't have any units or any base units for pi. Let's not write down the units for pi. What do you think radius lies in the domain of length, mass, time, current, or temperature? Radius should lie in which domain out of these? G. Abdul Muiz, it should lie, G. Amal, it should lie under the domain of length. That means the base units are meter. So area for circle as a formula pi r square. That means pi does not have any unit and radius has unit meter square. Okay. Doesn't matter if you don't want to have the formula for area for circle, you can use the formula of area for triangle. So area of triangle can be written as half base length into height. Half is a number, does not have any unit. Base length lies in the domain of length. Height also lies under the domain of length. So again, you can have the unit for an area to be meter square. Okay. So no matter which shape you are talking about, and no matter if you're talking about an irregular shape, the area will be having base unit as meter square. Similarly, if you talk about volume, we also have to explain the base units of volume in terms of specific shape. So I explained you area in terms of circle, and three-dimensional circle is being called sphere. The volume of a sphere is 4/3 pi r cube. Here once again, 4/3 are numbers. They don't have any base unit. Pi is number. It does not have any base unit. So only radius have a base unit, which is meter. Since radius has a power of 3, so any shape, whether it's regular or irregular, the volume will be having a base unit as meter cube. Okay? Understood? Okay, Abdul Moise. So let's move ahead, and now you'll help me to find out the base unit for pressure.
The formula for pressure, anyone? What should be the formula of pressure? Yes, Farva, rho GH is the formula for pressure of liquids. I'll explain that formula as well. And Abdul Moiz is saying, and Amal is saying force upon area. So pressure is force per unit area. I told you to remember the base unit of force. The force as a base unit, kgms minus 2. While area as a base unit, meter square. Nothing in the denominator. So that m square, when moves above, the power becomes inverse. That way, base is same, power adds. So here power is 1 and here power is minus 2. तो दोनों को मिलाकर हम लोग we can use rho gh because for rho gh has a specific condition that if you are talking about liquids, only then you can apply the formula for rho gh. E equals to rho gh. So I'll explain you after this general formula कि rho gh को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, but when he says write down the formula or the base unit of pressure and he has not identified the case that you are talking about liquids or fluids, so don't use rho gh, use simple formula. Okay, so and s minus 2 is written as it is. So basis same, power add 1 minus 2 becomes minus 1. So the base unit of pressure is kgm minus 1 s minus 2. Okay, now as Parva said, the formula for pressure is rho gh. Let me tell you how can you find out the base units of pressure if you're talking about rho gh. So pressure can also be written as rho gh अभी आपने डेंसिटी के बेस यूनिट में निकाले हैं, पहले डेंसिटी के बेस यूनिट निकाल लें, फिर मैं आपको rho gh समझाता हूँ. So density can be written as rho, which is curved like P, mass upon volume. We know the base unit of mass, we know the base unit of volume. So it becomes kgm minus 3. So this is the base unit of density. And now we know the base unit of density. Let's find out the base unit of pressure if we use the formula rho gh. So pressure equals to rho gh. Rho means density, and we already know the base unit of density, that is kg m minus 3. G is acceleration of free fall, and no matter whichever acceleration you are talking about, the base unit of acceleration will be same as ms minus 2. Okay, so here for acceleration of free fall, it's ms minus 2. Similarly, h is depth. For depth, it's m. Okay, so G is written as it is, m minus 3, m plus 1, m plus 1. So overall it becomes minus 3 plus 1 plus 1, m minus 1. While s minus 2 is written as it is. So one thing you also discovered that whichever pressure you're talking about, you'll end up having the same base units. Okay, beta? So on the request of Ms. Farva Shoro, I explained how can you find out the base units of rho GH as well. So we end up having the same base unit as the normal pressure or commonly asked pressure. Okay. So
one thing I want to clear here, if the quantity has the same nature, like whether you're talking about acceleration or acceleration of free fall, the base unit will be ms minus 2. Whether you're talking about pressure of liquids, whether you're talking about the pressure in general, the base units will be same. Okay? As far as the nature of the quantity same, base unit will be same. Like there are a lot of types of forces: friction, driving force, air resistance. If these all lie under the domain or under the family of forces, the base units are kgms minus 2. Okay? So this is how we do this topic. That is, I mean, a very easy topic. Just required some practice and some memory. You need to memorize the three base units जो कि मैंने आपको शुरू में बताए थे, स्पीड वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का एंड फोर्स का. ठीक है? And you just have to follow these 4 steps and you'll end up having the correct base unit for the quantity which examiner asked. So this was it. This was the plan of today's class. I'll explain you the paper pattern, the syllabus outline, and we'll have first and foremost topic of A-levels physics or AS physics. If you have any questions, you can ask. Then after that, we can conclude the class. ठीक है फरवा. Timings are yet to be decided. Most probably, the timings will be 10 till 11 p.m. Pakistan Standard Time, Monday, Thursday. As far as the timings are in mind, so I'll discuss it with Sir Salman and we'll finalize the timings. And inshallah, we'll start our classes regularly PM, Amal PM. Okay? So we'll start, finalize our timings and I'll inform you guys through your group. Okay? Okay.